Hello and welcome to Kalam IS. This is New Simply Put, dated 13 December 2024, and let's get started. The first article is about the Central Water Commission report about the water availability in India. The next one is about the Places of Worship Act and how has the recent Supreme Court judgment undid what the then CGI Chandrachud allowed 2 years ago. And the last one is about the Paris Agreement, how it stands today after 9 years. So, these are the clippings that can help you locate better from the Indian Express, and let's get started. 9 years after Paris Agreement, a critical look at the agreement. So we all know that it was in 2015 that the Paris Agreement was signed, and we aimed to basically arrest the increase in temperature of the Earth by 1.5 degrees Celsius to 2 degrees Celsius from the pre-industrial level, right? Now we all see that this time also the year is so warm, and we expect that definitely 1 degree Celsius तो increase हो ही चुका होगा, और शायद इससे ज़्यादा भी हो गया हो, तो it's not a big deal. So has the agreement really been effective? Because जो आज हम देख रहे हैं वो कुछ अलग ही स्टोरी बता रही है. हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ चुका है. We are also seeing that the amount of CO2 that is being released into the atmosphere, that is also increased by around 8% to 53 billion cc. So having seen this, we are actually wondering that the Paris Agreement is not as effective as it was envisaged. So why are that cases? That is because, firstly, unlike the Kyoto Agreement, where it was a mandatory thing on the developed countries, here in Paris Agreement, things are on the basis of nationally determined contribution. So this basically has been kind of misused in the sense that this has led to people staying in their comfort zone and in countries not taking really stern action as was required. So firstly is about the INDC kind of a situation. Second is about the lack of trust among countries. So last time when Donald Trump was the president, he left the agreement, and this time also it might be the case that Donald Trump leaves the Paris Agreement again. So big countries are leaving, and small countries like Vanuatu, they are also not finding relief. So they are looking for alternative places. So some days back also we heard that how they have launched a case in ICJ regarding the climate change. So they are looking for alternative platforms. Also the finance part. So in recent COP29 discussion, we saw that they are talking about giving $300 billion by 2035. So that is again very less and very far fetched. So this is going to happen after 15 years. However, yesterday only we saw that the first ice-free day might happen before 2030. So in that cases, the finance, it was expected to get around 1 billion. Uh, the expectations was to receive a greater amount of finance, but this is not happening today, and whatever is being promised is in a future date. So given these three reasons, the author says that it's not as effective as it was envisaged. So let's just review it quickly. So the current status is about that we aimed to increase the arrest in the temperature within 1.5 degrees Celsius. However, it was a very ambitious goal, and despite its initial promise, there has been the fact that it is perceived as ineffective. This is because, like I said, the emissions have increased by 8% from 49 billion tons to 53 billion tons. Going forward, we also see that the temperatures have also risen around 1.1 degrees Celsius to 1.45 degrees Celsius. So 1.5 degrees Celsius that we wanted to prevent, this is almost impossible because the reality is this, right? Also, 2024 is projected to be the first year to be potentially breaching the 1.5 degrees Celsius threshold. So, how are we really going to say that Paris Agreement is more successful when this is the grim reality? So, the reasons for disappointment is, as I have told, that there is a weak global action. There is climate finance which is insufficient. Like I said, $300 billion comes in 2035, as was seen in COP, and there is very less trust among the countries themselves, right? So going forward, why is that the case? So there is a shift in responsibilities and financial shortfalls. Shifting obligations imply that the developed countries were required to do more when it came to Kyoto Protocol, and that basically assigned specific emission reduction targets to developed countries, leaving developing nations with minimal responsibilities. However, here in Paris, like I said,
Everything is on nationally determined contributions, and you set a national target for yourself. This leads to laxity rather than proactiveness. Next is the insufficient financial commitments. So $100 billion had to come annually way from 2015, way before. However, this is now coming after 2035. Also, going forward, there is a political change and loss of trust, like we have discussed about Donald Trump possibly leading to an exit, which indicates the fragility in the agreement. And also, there is an erosion of trust that Vanuatu are exploring other legal avenues. Right. So, going forward, we need to explore alternative strategies and bring stronger international collaboration. And this is what the author is saying. Going forward, we're talking about the Places of Worship Act and how the Supreme Court undid what the CJI Chandrachud allowed 2 years ago. Right. So, basically, this act came in 1991. Right. So, there was this Ram Janmabhoomi case in Ayodhya, which led to a lot of communal unrest in the country. And the government, seeing that, thought that let's prevent such a case in the future and have more peace and stability. And therefore, they got this act. The intention of this act was to basically ensure that whatever place is there, the religious character of the place will remain as it is on 15th August 1947. So this was the most prominent feature of the act, right? And this was to prevent any further confusion and communal agitation. And the only exception was, like I told, Ram Janmabhoomi. However, in October 2020, the first petition was filed which challenged the act, and then five more petitions were subsequently filed on various grounds, like there is an arbitrariness on the date of which 1947 has been placed, and also judicial review being the most important basic structure feature of the constitution that has been taken away. So this is how it first started, and then in August 2021, it went on to the fact of Gyan Vapi Mosque. Right now, everything was here still in the initial stage. However, in 2022, the CGI Chandrachud orally observed that the survey may be allowed, which is basically a non-invasive survey. What this means is कि वहाँ पे वैसे तो कह रहे हैं कि आप किसी प्लेस को जाके उसकी डिटर्मिन नहीं कर सकते हो कि क्या कैरेक्टर है, जो है वो 1947 में जो बन गया है वही है. बट वो CGI ने ये कहा कि अगर आपको एक बहुत ही हल्का सा सर्वे करना है, राइट, कि आपको थोड़ा सा जाके देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप वो थोड़ा सा अलाउ कर सकते हो. बट ये हल्का सा सर्वे अलाउ कर सकते हो, नॉन इन्वेसिव सर्वे, दैट वाज एक्चुअली द टर्म. इसको कितनी ब्रॉडली इंटरप्रेट कर सकते हैं और ये कितना ज़्यादा रैमिफिकेशंस होल्ड कर सकता है, ये अब हम देख रहे हैं. जहाँ पे इतने समय, इतनी क्विकली अराउंड 5-6 नए केसेस संभल से लेकर और दरगाह वाला मोइनुद्दीन चिश्ती वाला दरगाह, इतने सारे केसेस खुल गए हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गॉट इंटरप्रेटेड एंड rather extrapolated in such a unintended way that now the Supreme Court said that any further surveys order will not be entertained, and the Supreme Court has barred further survey orders, and they have also restricted the registration of fresh suits. So क्योंकि इसको चंद्रचूड ने जो बोला था नॉन इन्वेसिव अलाउ करेंगे, जिसकी वजह से गलत इंटरप्रिटेशन और एक्स्ट्रापोलेशन हुआ और अभी कंट्री में आप जो देख रहे हैं वो हो रहा है, तो इसको अरेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में एक नया जजमेंट पास किया है. सो दिस इज बेसिकली द होल न्यूज़, एंड लेट्स जस्ट रिव्यू वेरी क्विकली. So that is what it is saying, that it prohibits the conversion of the places of worship, and it asks to maintain that religious character so that there are no disputes, right? Going forward, the recent ruling that has come by the Chief Justice Sanjeev Khanna, and it is said कि कोई भी अब effective orders नहीं पास होंगे, there will be no new civil suits, right? कुछ और अब और जगह नहीं आएंगे. लीगल कॉन्टेक्स्ट यही रहा है कि सर्वेस वाली बात, non-invasive is the key word, right, like I have said, and civil courts cannot override Supreme Court authority regarding ownership disputes. तो ये इसका लीगल बैकिंग है. कल को अगर नीचे सिविल कोर्ट्स में फाइल होते हैं, so they actually have to don't have to entertain this because they cannot override the Supreme Court orders. So ये काफ़ी strong judgment आया है. ये currently जो pending
सूट्स हैं मॉस टेम्पल डिस्प्यूट को लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह पे बन चुके हैं। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे उन सबका नाम लिखा है। ज्ञानवापी मॉस्क कहाँ पर है? मथुरा में है, संभल में है, लखनऊ में है। कुछ कुछ इश्यूज हैं हर जगह, हिस्टोरिकल साइट को लेके, या फिर किसी जगह टेम्पल होने का, राइट, या फिर किसी जगह सेम ही बात है कि सब डिमोलिश करके ही बनाए गए हैं. सो दीज आर द notable cases, right? And what is the implication of this Supreme Court recent judgment? First is of course the maintenance of the religious character and the holding of the places of worship act in essence. So basically पहले ये act का जो मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है वो लोग कह तो सकते हैं कि एक्ट के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन जो उसकी एसेंस है, जो इसका रियल इंटेंशन है, वो अपहोल्ड नहीं किया जा रहा था. तो अभी यहाँ पे दे आर सेइंग दैट विल मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर. Honestly, this will also, further minimize the communal discord that happens, and there is a legal authority clarification with the sense that the Supreme Court is reaffirming its role, and that cannot be overridden by the civil courts. So that also is coming from a legal authority standpoint. Further, the continuous challenges to the constitutional validity of the Places of Worship Act, this so far the ongoing legal landscape stands here, and this also kind of stands little arrested. So with this, the Supreme Court has actually taken its role and brought resolution to maintain peace and uphold the religious equality in India. This is the article. Let's go forward with the assessment of water resources of India in 2024. So as we know, CWC releases the water survey. So news में ऐसा बोला जा रहा है कि they try to figure out the per capita water availability, right? So we have studied in NCERT also that 1700 cc के बिलो होता है तो वाटर स्ट्रेस हो जाता है. अब इंडिया में माना जाता था कि 1900 के आसपास है, 1900 cc के आसपास है, और अब इंसान यही अज्यूम करेगा कि गोइंग फॉरवर्ड विद टाइम एंड द अमाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट इज हैपनिंग, ये जो 1900 की वैल्यू है ये कम होनी चाहिए, राइट? अगर हम अब वापस से नया सर्वे करें तो हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि 1900 से थोड़ा कम होना चाहिए करेंटली वाटर, क्योंकि कितनी जगह डे ज़ीरो आने की बात हो चुकी है, शिमला में, बैंगलोर में, चेन्नई में. वाटर स्कार्सिटी की भी बातें हम सुनते हैं हीट वेव्स के दौरान. हाउएवर जो ये रिपोर्ट आई है वो बोल रही है कि 2000 से ज़्यादा सीसी का पानी इंडिया में पाया जा रहा है. तो दिस इज़ क्वाइट अ शॉकिंग थिंग कि जहाँ हमारा 1900 सीसी के आसपास पानी आता था, अब आप बोल रहे हो 2000 सीसी से भी ज़्यादा पानी है. हाउ इज़ दैट हैपनिंग? So this is what the report is actually analyzing. Let's see how it states. So CWC ने बेसिकली जो रिपोर्ट निकाली है उसमें वही बोला है 2115 बिलियन सीसी तो क्यूबिक मीटर्स इतना पानी मिला है 1985 से 2023 तक, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2115 सीसी. तो क्यों हो रहा है ऐसे? लेट्स सी. बिफोर वी सी ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया. अब इतनी बड़ी रिसर्चेस और सर्वेस में हर तरीके का मेथड होता है कि हाँ, जैसे सिंपली अगर हम कोई 2+2 करें तो आंसर 4 आए, लेकिन हम 2+3 करके 5 आ जाएगा, लेकिन 2 into 3 करके 6 आएगा. सो मेथोडोलॉजी से भी वैल्यूज़ काफ़ी चेंज हो जाती हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी जो यहाँ पे मेथोडोलॉजी की काफ़ी बात की गई है, तो पहले तो असेसमेंट बेसिस की बात की गई, कैसे कैसे आपने कैलकुलेट किया, कहाँ कहाँ पे. तो पहले हमने देखा नेट रन ऑफ कितना है, कितनी बारिश हो रही है, कितना एवापो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है पानी. साथ में थोड़ा पानी लैंड यूज़ और लैंड कवर की वजह से भी कभी कभार सीप इन करता है या फिर नहीं भी कर पाता है. सो वो सारा सॉइल डेटा सेट सब देखा हमने, एंड हमने कुछ कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया. तो ये हमने इंक्लूड किया है. एक्सक्लूड में हमने क्या किया, ऑब्वियस ही बात है, जो पाकिस्तान की साइड पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब एक्सक्लूड किया है. बट वाई इज़ दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर हम पाकिस्तान की इंडस ट्रिब्यूटरीज एक्सक्लूड कर रहे हैं तो बाकी जो ब्रह्मपुत्रा है या फिर जो और ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडिया के बिहार भी फ्लो करती हैं, शायद हमने उसको इंक्लूड किया होगा. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऑथर सेज कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं. तो अगर टोटल रिवर के हिसाब से पानी देखना है तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी में सबसे ज़्यादा पानी इन जगहों पे मिलता है, एंड सबसे ज़्यादा कम पानी साबरमती, पेन्नार एंड माही में मिलता है. सो लाइक आई हैव सेड दैट पानी ऑलमोस्ट 1900 के आसपास होता था पहले, लेकिन अब ये बढ़ चुका है 2115 जितना, और ये मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से हुआ है. तो वही है, इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन मेथोडोलॉजी एक्चुअली चेंज हो गई है, इसलिए हमें नए रिजल्ट्स मिले हैं. सो क्या क्या हैं वो चीज़ें? पहली बात तो ये ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो लाइक आई हैव सेड, ब्रह्मपुत्रा हो गया, और आप बताइए क्या क्या ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं. इंडस है, गंगा भी काफ़ी नेपाल में जाती है, राइट?
तो ये जो दो रिवर्स हैं इनका ट्रांस बाउंड्री कॉन्ट्रीब्यूशन, जो पानी नेपाल से इंडिया में आता है या फिर जो पानी चाइना और भूटान से इंडिया में आता है, वो सब भी हमने इंक्लूड किया है और इसलिए आज हमें जो पानी की एस्टिमेट मिला है वो ज़्यादा मिला है. Inclusion of Bhutan's contribution to Brahmaputra and Nepal's contribution to Ganga. This has led to the increase, not the actual rainfall or the actual runoff. However, the change in the methodology has done that. तो इसलिए आज हम ये बात पाते हैं. नाउ अगर हमें एग्जैक्टली फिगर आउट भी करना है कि वाटर को हाउ टू रीड द वाटर इंडेक्स, राइट. सो वही बता रहे थे मैंने आपको पहले, जैसे कि 1700 सीसी से कम हो तो वाटर स्ट्रेस है, लेकिन अगर 1500 से कम हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा लाइक वाटर स्ट्रेस के एक्सट्रीम अमाउंट से शुरू हो जाता है. 1000 के बिलो तो इट्स कंसिडर्ड एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, राइट. So this is the article that how the increase has come out. Let's see the prelims question. Basically, I want you to do this question by yourself on the basis of the tricks and the techniques we have learned so far. And I would be very happy if you post on the chat box in the YouTube comment section about the your answers. And if there are any questions and doubts, you can also post that. We can take that up further. I would also be glad to see how are we learning and progressing with respect to the tricks we have learned so far. So this we will discuss today. However, I've given the answer here, but still just try to do elimination and use your existing knowledge, right. And for the last part for mains, we have how do melting of Arctic ice and glaciers of the Antarctic differently affect the weather and human activities on Earth. So this is what you have to explain. Please put it in the Telegram group or wherever you find comfortable. We'll be happy to give you feedback.